So we have covered section 11 in the last lecture. Now let's move to res gestae, right? Res gestae. I'll stick to res gestae as I told you in the previous lecture, because Latin है तो G j नहीं होता, g हो जाता है वहाँ पर. Res gestae given in section 6 of the Indian Evidence Act. Relevancy of facts forming part of same transaction. Before we get into all the legal झमेला of here, हमें ये काम करना है कि जी मान लेते हैं लेट अस से अगेन नंदिनी से मर्डर करवाते हैं आदित्य का. नंदिनी जी आपको क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई आदित्य जी से? लेकिन नंदिनी जी को अब प्रॉब्लम है तो वो मर्डर करती रहती है आदित्य जी का. हर लेक्चर में ही मर्डर हो जाता है बेचारे आदित्य का. तो अब नंदिनी जी ने फिर मर्डर कर दिया आदित्य जी का. लेकिन नंदिनी जी बोल रही हैं उस टाइम पे, मर्डर करते टाइम बोल रही हैं, तूने मेरी बहन को कैसे छेड़ा, मैं तेरे को बताऊंगी, तेरे को तो आज मैं देख देख मैं क्या हश्र करती हूँ तेरा. वो कह रहे भाई साहब, और आदित्य जी कह रहे बस बस देवी जी बस एक बारी माफ कर दो, प्लीज प्लीज आगे से नहीं करूंगा. Now whether these are relevant, whether this is a fact and issue, what exactly is happening here, whether we'll be able to consider these words of Nandini Aditya या अगर कोई तीसरा bystander है, whether we can consider them as relevant for the purpose of proving a fact and issue. But this lecture will explain very clearly what the concept of res gestae is to you. Relevancy of facts forming part of the same transaction. Now when she has said these words, is it part of the same transaction of the fact and issue is whether Nandini killed Aditya? Is it a part of the same transaction? Yes, it is. However, it is not a fact in issue, but we will now treat it as a relevant fact to prove the existence of a fact in issue. All right. So facts which, though not an issue, are so connected with the fact and issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and same place or different time and places. तो ये भी MCQ है prelims का, whether they occurred at the dash option A, option B, C, D, 1 and 2 only, 2 and 3 only. Can you see the MCQ being formed for the purposes of prelims? Alright, so mark it. और ये सेक्शन याद होना ही चाहिए. सेक्शन 11 जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा याद होना ही चाहिए. ठीक है जी. अच्छा, इलस्ट्रेशंस में हम अभी जरा कूद रहे हैं. इलस्ट्रेशंस में आपको मैं पहली इलस्ट्रेशन करता हूँ. वील स्टिक टू द पहली इलस्ट्रेशन इन दिस लेक्चर. We'll go to the other illustrations once you think. We'll go to the other illustrations only if you think that you have understood this, and try to connect it to section 11 जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा. A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it is to form part of the transaction is a relevant fact. कह रहे जी जो उस ट्रांजैक्शन के दौरान जो कुछ हुआ, बेसिकली थिंग्स डन. रेस गेस्टे को जब आप LLB एंट्रेंस में तो MCQ ये रखते थे ना, व्हाट इज रेस गेस्टे मीन? दैट्स थिंग्स डन. थिंग्स डन इन द सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. अब मुसीबत यह आएगी कि भाई साहब ऐसा है, what exactly is the same part of the transaction? What exactly is that thing which we can include in the transaction itself? But for that we'll need to understand what exactly is the transaction. Therefore we'll need to set out very clearly what is the fact and issue. Then we are going to get these things to tell the court ki aisa hai, this was through, or rather this involved, or this is involved in the same transaction. Therefore these utterances or these things become relevant. All right, so they become relevant. So we are trying to include certain utterances, actions, things that happened while that incident was taking place under the doctrine of res gestae as given in section 6 of the Indian Evidence Act, to make those facts that happened in the same transaction as relevant facts to either prove, disprove, not prove the fact in issue. Right? Hopefully अभी तक हम जितने लेक्चर करके आए एविडेंस एक्ट के सारे अपने क्लियर है. Principle of law embodied in section 6 is res gestae, is known as res gestae in English law. So the essence of the doctrine is, well, the fact is not an issue. So therefore आपका fact and issue को it doesn't become relevant as it is connected with the FIU. So it is not the main fact and issue, but since it is connected and it is going to help us here to either prove, disprove or not prove the fact and issue, we are going to include it under relevant facts. And but the test is that it has to be of the same transaction. All right. So FIU is
fact and issue as to form part of the same transaction. So this is an exception to the general rule of hearsay. Now why do we say this hearsay? तो हमने section 11 के अंदर भी काम करा दिया था बेचारे का. Hearsay को थोड़ी बहुत तो हमने elasticity थी ना section 11 के अंदर include करा दी. Now hearsay evidence is not admissible, but if it is res gestae under section 6, that is उस टाइम पे क्या बोला जा रहा था, क्या किया जा रहा था, and जो utterances थे, जो word थे या action थे, they can be used to either prove, disprove, not prove the fact and issue, the main mudda of the case. We will include it. आगे चलते हैं. So rationale of section 6 is certain statements of facts are admissible under section 6 based on their spontaneity or immediacy of such statement or fact in relation to the fact in issue. तो सारी evidence act पहले क्या कर रही है, fact in issue जो मुद्दा है केस का वो अलग filter out कर रही है. फिर वो ढूंढने जा रही है कि अब मैं क्या क्या relevancy का tag दूं जो कि इस fact in issue को के ऊपर एक कंक्लूजन आने के लिए, एक जजमेंट आने के लिए जज को हेल्प करे. दैट इज द कोर एसेंस ऑफ द एविडेंस एक्ट. ये समझ में, ये छोटी सी अगर ये फंडा क्लियर है, आप एविडेंस एक्ट के मास्टर हो जाएंगे इवेंचुअली. अभी तो नहीं होंगे, अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, 5वें लेक्चर में पहुंचे. राइट. सो इफ आफ्टर इंटरवल, अब भाई ऐसा ना, द की इज इमीडिएसी और स्पॉन्टेनिटी. If after interval and it's not relevant, the other person has had time to think about it and then basically tell you that. So the key is immediate or alongside the main fact and issue. So the classic case law जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने काम करा था, Tepper versus R, popular prelims का question. Please write the case law down. Privy Council considered the extent of rule of res gestae up to which basically the facts can be allowed as an exception to the exemption against hearsay evidence. Alright, we'll again look up the case law. यहाँ पे हुआ क्या था, just थोड़ा briefly, जब हम case law की list सारी अपनी एक ही बार में करेंगे. So human utterance is both a fact and means of communication. So human action may be so interwoven with words that significance of this, significance of the action cannot be understood without those words. मतलब कोई एक दूसरे को, एक सामने वाले आदमी को साइलेंटली पीट रहा है, आपको क्या लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ साइको सॉर्ट ऑफ अ केस कि भाई एक तो बड़ी निर्दयी आदमी है, मतलब ये हो क्या रहा है, इट लुक्स स्कैरी. बट अगर वो बोल के, जो उस टाइम पे वो जो बोला जा रहा है, जो मार पिटाई सबके अंदर, ऑल ऑफ दैट हियरसे है ना, आप सुनेंगे, राइट? ऑल ऑफ दैट we can include as relevant fact to either prove, disprove, not prove the fact in issue, which is whether A killed B or not. So we are again going to go after Nandini in example. So Nandini murders Aditya with a club. लो जी, नंदिनी जी आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? I think you really hate Aditya, don't you? So Nandini murders Aditya with a club. जी मैडम ने वो बैट लिया या वो गदा टाइप ली और पीट मारा आदित्य को. So transaction is what? The crime of murder, right? So हम basically यहाँ पे क्या करेंगे? As using section 5, N beat A with a club, N caused death. N कौन? नंदिनी जी. So Nandini caused death, Nandini had intention. They will all be in issue, and they form parts of the same transaction. Basically, Nandini beat Aditya with a club, Nandini caused his death, Nandini had intention to kill him, right? So all are an issue and they form part of the same transaction. Evidence can be given for these facts and issue under section 5, correct? अब section 6 के अंदर, but words uttered by Nandini, तूने मेरी बहन को कैसे छेड़ा, तूने मेरा परिवार को बहुत दुखी किया हुआ है, मैं तेरे को बताऊंगी, अब तो दुख खत्म होगा, मैं न्याय करूंगी. But words uttered by Nandini at or about time of beating are not in issue. How are they in issue? I mean, they're not an issue. भाई उसने वहां पे इस टाइम पे बोला था, कोर्ट इस बात पे थोड़े ना लड़ाई कर रहा है, करेक्ट? कोर्ट तो ये कह रहा है कि इधर आओ नंदिनी जी, whether she had intention, whether she actually committed the crime, whether वो क्या बोलते हैं, whether she intention हो गई, whether she committed the crime, whether death was caused, those are facts in issues जिस पे मेन मुद्दे पे लड़ाई हो रही है. Now we are going to be using these words under section 6 to as relevant facts to either prove, disprove, not prove the fact and issue. Simple सा फंडा, right?
So Nandini at or about the time of beating are not an issue, but they form part of the transaction because they are spontaneously being said. They are immediately being said. Correct? So no one beats silently, nor would the person be beaten silently. वो भी कुछ बोल रहा होगा. आदित्य जी क्या बोला था जी आपने? Right? Nor person standing by will be watching silently. अगर कोई witness है साथ में, whether the eye witness है वहाँ पर, तो वो भी अरे रुक जाओ मैडम क्या कर रही हो, अरे अरे प्लीज प्लीज माफ कर दो. All of that you can include as relevant facts for the judge, to help the judge to give a decision. Basically the court will allow all of those कि भाई क्या बोला था उसने, अच्छा अच्छा, तो इनको एडमिट कैसे कराएंगे आप कोर्ट में एज रेलेवेंट फैक्ट्स? सेक्शन 6 को यूज करते हुए. सिंपल बात है. So the transaction includes all these utterances which, though not an issue, they form part of transaction of murder, which is the subject of inquiry. Therefore they become relevant under section 6. Section 11 में क्या टेस्ट था कि probability बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा, तो अगर वो बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा तो हम अलाउ कर देंगे जी. ग्रेट. यहाँ पे क्या टेस्ट है? इफ दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. तो सारी लड़ाई अब इस पे होगी वेदर दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. तो जो वकील साहब इनको नहीं इंक्लूड कराना चाहेगा वो कहेगा दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. प्रोसिक्यूशन कहेगी दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द कॉइन यू आर ऑन. राइट? So the trouble is, well, you how to filter out or how to find out whether fact forms part of the same transaction. इस पे classic case law है. Again case law वाली इसमें ही करेंगे. R versus Bedingfield बस लिख लीजिए अपने notes के अंदर कि जब इस पे note वगैरह आपको लिखना हो, depending on whichever state the exam that you're taking, you need to basically write this case law, mention this case law. Now, all of these examples, all of this, you have to demonstrate to the examiner, especially in the judiciary mains ka paper, that you have understood the concept using the appropriate language as well. Because, well, the competition is quite high, so we have to use better language than our competition. So A accused of murder of B by beating him. A was accused of murder by beating him. Now, whatever was said by A or by B or bystanders at the time of beating becomes relevant thanks to section 6. But presume now presume this. अब नंदिनी जी को थोड़ा सा हम innocent बनाएंगे. काफी इनको 5 लेक्चर से मर्डर ही बनवा रहे हैं. नंदिनी was in room and she hears her servant that Shivangi is killing Garima. लो जी. So Nandini then rushes out of her room and Shivangi has ran away. But servant tells Nandini what happened. So नंदिनी जी का सर्वेंट है जो कि कमरे में नंदिनी जी लेटर से ये लेक्चर देख रही है. बाहर से सर्वेंट कहते हैं दीदी जल्दी आओ बाहर, शिवांगी ने गरिमा को मार दिया. जब तक नंदिनी जी वहां पहुंचती हैं शिवांगी जी भाग चुकी होती हैं और गरिमा जी वहीं पे पड़ी हुई है. कुछ ऐसे ही दोस्ती में हो जाता है. तो जी यहाँ पे अब नंदिनी क्या करती है? एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, she calls the police and tells them whatever happened, right? And police क्या करती है? They bring Shivangi to trial कि जी शिवांगी जी को पकड़ के लाओ. So let's say the servant is not available at trial, but Nandini is called as witness who heard the servant cry. Her evidence of what she heard becomes relevant under section 6 because that servant's cry is now immediate and spontaneous with the main fact and issue, which is whether Shivangi killed Garima or not. How did she kill? Intention, all become fact and issue. But that servant cry was immediate. Now that will be basically relevant, all right? So under section 6, even though it is hearsay, just ignore the dolls in the background. They keep going mad, my padosis, even in lockdowns. Even in hearsay, please do remember now that this can be admitted under section 6 because the cry was spontaneous with the event Shivangi beating Garima, which was the event. It forms the part of the transaction, all right? But let's say the servant, उसने उस टाइम कुछ नहीं कहा, ये नंदिनी जी ने ये लेक्चर देखा और आराम से अपनी तैयारी व्यारी करी और अपने मतलब आराम से सो गई. एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग द सर्वेंट टेल्स कि कल तो शिवांगी ने गरिमा को मर्डर कर दिया. Now this is not allowed because the spontaneity, the immediacy is missing. क्योंकि अब ये as relevant नहीं होगा because now this is not part of the same transaction of Shivangi killing Garima. Hopefully this is clear. And I believe that if you have paid attention very closely, this should be clear.
Now we'll go to example number 2. Illustrations basically हमने सारी देखनी है of section 6 because they are very very important और यहाँ पे ढोल भी ज़्यादा बच रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ये करेंगे कि जी आप ये लेक्चर अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो अगले लेक्चर पे जाइएगा मत, री वॉच दिस लेक्चर एंड ट्राई. और ये समझ कैसे आएगा, जब आप खुद समझा पाएं कि रेस गेस्टे है क्या, क्योंकि इस टॉपिक को मतलब आप स्किप करके नहीं आगे बढ़ सकते. तो विल टेक अप इलस्ट्रेशंस बी सी डी आगे वाली अगले लेक्चर्स में, और ये वाला काम हम सारा खत्म करते हैं. देन विल मूव ऑन. बेसिकली पहला टारगेट है दैट वी रीच सेक्शन 55 तक हमारी सारी एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी हो. 32, 7, 9 सब 8 अभी मोटिव कॉन्डक्ट सब करना है, तो वो सारे अब निपटाना शुरू करते हैं और अगले लेक्चर में आपको मिलता हूँ. होपफुली नाउ सेक्शन 11, सेक्शन 6 are clear. All right, they should be crystal clear in your head so that we can move forward. And I'm taking it a lot slower than I usually teach. This has to be drilled into your mind for our judiciary exam preparation. All right, now see you in the next lecture. Take care. Bye.